डाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर मकबंग वीडियो। और आज की वीडियो का मेरा मेन्यू है, यहाँ पर है राजस्थानी खट्टी वाली कढ़ी पकौड़े के साथ बनाई है मैंने, और स्टीम्ड राइस लिया है साथ में। यहाँ पर एक कद्दू की सब्ज़ी है, कद्दू की चटनी, प्याज लिया है और पापड़ लिए हैं। अगर कद्दू की चटनी की ये क्रिस्पी क्रिस्पी वाली चटनी है, जिसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल का नाम दूंगी, वहाँ पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। क्विक रेसिपी आप बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको ईटिंग वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो अभी थोड़ा गर्म ही है खाना, और मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोलूँगी क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ सकता है। आज मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बनाने बैठी हूँ और आज ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया फिर से अगेन। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट बाइट। बहुत टेस्टी है। टेस्ट डाला है। तीखी भी बहुत बनी है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का खाना मैंने बहुत इंजॉय किया। खाना कढ़ी और चावल बहुत टेस्टी लग रहे थे और इसी खट्टी कढ़ी खाने का मन मेरा बहुत दिनों से कर रहा था, तो आज स्पेशली मैंने बनाई और वीडियो इसका रिकॉर्ड कर लिया। पापड़ की और चटनी वगैरह की कुछ भी रेसिपी आपको देखनी हो कढ़ी पकौड़ा की, तो सब कुछ ना मेरे कुकिंग चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ की वहाँ पर रेसिपी डाली हुई है, तो अगर लिंक शेयर हुई तो मैं ज़रूर से कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल का नाम मेंशन कर दूंगी, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वो चैनल भी आपको पसंद आता है, उसके वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को भी आप लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मैं आप सब लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।